Hey, good morning class. How are you? I hope you all are fit and fine in your home and doing your job in proper manner. So dear student, myself Anil Adhikari, PGT Mathematics from DPS Lamachod, and today I am going to discuss about the remaining question of exercise 9.3, which is related with geometric progression. In my past video, I have discussed about arithmetic progression and its exercise, and in my Google Meet doubt class, I have discussed about what is geometric progression and what is geometric mean, what is the general term of geometric mean, and what is the sum of n terms of geometric mean. Today I am going to recapitulate first all the thing, okay, and then I will proceed to the exercise. So what is GP? Basically, common ratio is constant throughout the series. What is GP? GP is a geometric progression in which common ratio is constant throughout the series. That is, R should be constant, where R is common ratio. Now, general term of GP equal to an equal to a r to the power n minus 1. Here a is the first term and r is common ratio. How did we get common ratio? By dividing any term with his previous term, okay. That is, r can be written as a k upon a k minus 1, where k does not equal to 1 है ना, k is greater than 1 कर लीजिए, यानी k is greater than 1. Sum of n term of GP. Here again two cases. Case first, when common ratio is greater than 1, and case second, when common ratio is less than 1. For the first case, sum of n term is a r to the power n minus 1 divided by r minus 1, and for the second case, when common ratio is less than 1, then sum of n term is a 1 minus r to the power n upon 1 minus r. Now geometric mean. If a and b are any two real number, then root AB is the geometric mean of A and B and is denoted by GM. So this is all about my previous class in which I have discussed these points, okay. So this is the basic about the geometric progression. On behalf of this basic, we are going to execute this knowledge while solving the question. Till then, pause the video and take the screenshot. Okay, so now see student, in my last Google Meet doubt class, I have discussed till question number 12. So today I am going to discuss from question number 13. So question number 13 is, how many terms of GP? 3 square, 3 cube, dash 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 are needed to give the sum 120. To give the sum 120 है ना. The question is how many term, okay, how many term of this series? This is a geometric series, so how many term of this series are needed to give the sum 120? So here we have given the series. The series is 3, 3 square, 3 cube and so on.
So the very first term of the series, which is denoted by small a, is 3, and the common ratio, we get the common ratio by dividing 3 square by its previous term, that is 3. So this is, you can say 3. So here common ratio, which is r, is greater than 1, है ना. So how many term means we have to find out the value of n, so that how many term are needed, so that the sum of the term is given as 120. So Sn, let n term, let the sum of n term is 120. So Sn is given as 120. Now apply the formula. What is the formula for Sn? When r is greater than 1, then the formula for summation is a r to the power n minus 1 upon r minus 1 equal to 120. What is the value of a beta? That is 3. What is the value of r? Again 3. So 3 power n minus 1 upon 3 minus 1. This is equal to 120. Now 3 power n minus 1 equal to 120 multiply 3 minus 1 2. So 2 will multiply with 120 and divide by 3. 3 4 ja 12, 42 ja 80. So 3 power n equal to 80 plus 1, that is 81. 3 power n is equal to 81. Now we have to break 81 in power of 3. So it will begin 3 to the power 3 3 ja 9, 9 3 ja 27, 27 3 ja 3 power 4. Now comparing both sides, we get the value of n is 4. This is your answer. Okay. Pause the video and take the screenshot. Now next question. Our next question is question number 14. The sum of first 3 term of GP is 16. Question number 14. The sum of first 3 term of GP is 16. The sum of first 3 term means A plus AR plus AR square equal to given as 16. Okay. And the sum of next 3 term. So after AR square, what will be the next term? AR cube plus AR to the power 4 plus AR to the power 5. Okay. So sum of next 3 term is 128. Let this is second. Determine the first term, common ratio and the sum of n terms. Okay. We need to find the first term, common ratio and sum of n terms of the series. So now solve this. Okay, what we have given here, we have given the sum of first 3 term is 16 and the sum of next 3 term. So after this 3 term यहाँ पे फिनिश होते ही नेक्स्ट टर्म स्टार्ट होगा चौथे से. ओके. सो फोर्थ टर्म इज AR to the power 3, फिफ्थ टर्म AR to the power 4 and sixth term AR to the power 5. Sum of these term is 128. Now we need to find the first term, the common ratio and the sum of n terms. So the very first equation we can take A as common. So what we get in the, within the bracket 1 plus r square equal to 16. Now in the second one we have, if we take common AR cube, what we get beta? We get 1 plus r square. Again you can check it. After taking AR cube common, here we get 1 plus here you get r, here we get AR square. This is 128. Now dividing both sides, this amount got cancel out, this also got cancel out. So what we get, 1 upon r cube equal to 16 upon 128, है ना. तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32. So 1 upon r cube equal to 1 upon 8. On taking reciprocal both sides, we get r cube is equal to 8, which can be written as 2 raised to the power 3. Okay. So r cube is equal to 2 raised to the power 3. Now since there is an equality sign between these two terms, so this will be equal only when r is equal to 2. So the common ratio is 2. Now for finding the first term,
we have to put the value in either of equation first or second. So for our convenience, for the shortest of calculation, we can put the value of r here. So what we get, a, after taking common a, we get 1 plus r square equal to 16. Now put the value of r equal to 2 here. So a 1 plus 2 plus 2 square equal to 16. So a 2 2 ja 4, 4 plus 2, 2 2 ja 4, 4 plus 2 6, 6 plus 1 7 equal to 16. So the value of a is 16 upon 7. यही कुछ वैल्यू आ रही है इसकी, है ना, गड़बड़ तो नहीं हुआ ना कहीं पे? So the value of, on putting the value of r here, the value of r is 2. So 2, 1 plus 2 plus 2 to the 4, 4 plus 2 6, 7. Yes, value of a is 16 by 7. Now sum of n term, Sn is equal to, since here r is 2, that is greater than 1, so we apply the formula Sn is equal to a r to the power n minus 1 upon r minus 1. Now put the value of a here, that is 16 upon 7 time r means 2 to the power n minus 1 upon 2 minus 1. That is our answer is 16 upon 7 2h to the power n minus 1. This is the sum of n terms. Okay, you can also check the answer. Okay, take a screenshot. Next question beta. Next question number 15, you will do your own. Question number 16, find a GP for which sum of the first two term is minus 4 and fifth term is 4 times the third term. So see the question number 16. Question number 16, find a GP for which sum of first two term equal to minus 4. So sum of first two term is given as minus 4 and the fifth term is 4 times third term. Fifth term means a5 is, fifth term is 4 times third term, 4 times third term. Okay, so we need to find the GP. What is the GP? We need to find the GP. Okay, so beta fifth term, the value of fifth term is ar to the power 4 equal to 4 times, what is the third term? Ar to the power 3. Okay, now a and a got cancel out, r to the power 4 upon r cube equal to 4. So here we get the value of r equal to 4, है ना, the value of r is 4. Now substitute the value of r here, we get a plus ar is given as minus 4, sum of first two time is minus 4, taking a common we get 1 plus r is equal to minus 4. So a 1 plus, what is the value of r? That is 4 minus 4. So 4 plus 1 5, 5a is equal to minus 4. So a equal to minus 4 upon 5, है ना. Now the first term is minus 4 by 5, the second term means a2 equal to ar equal to minus 4 upon 5 into what is the value of r? That is 4, means minus 16 upon 5. The third term a3 is equal to ar square, that is minus 4 upon 5 into 4 square, means 4 4 ja 16, 16 4 ja 64. So minus 64 minus 64 upon 5 and so on. So the GP is, what is the GP? Minus 4 upon 5 comma minus 16 upon 5 comma minus 64 upon 5 and so on. So this is the required GP. Pause the video and take the screenshot. You can also check the answer beta 9.3, answer number 16. -9.3. -4 upon 3 आंसर आ रहा है, -4 upon 3, -8 upon 3, -16 upon 3, 16. हमारा कहाँ गड़बड़ हो गया भाई? -4 upon 3, -8 upon 3, -16 upon 3. बेटा कहीं कुछ गलत हुआ है क्या? AR स्क्वायर, कहाँ गलत हुआ है? क्वेश्चन नंबर 16 अगेन चेक करते हैं बेटा. फाइंड अ जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4
and fifth term is 4 times the third term. So sum of first two term is minus 4. First term is A, second term is AR. Okay, it is equal to minus 4, and the fifth term is 4 times the third term. So fifth term is 4 times third term. So fifth term is AR to the power 4 equal to 4 times third term is AR to the power. Okay, here this will become AR square. So what we get here, R square. Okay, R square divided by this. So we get R square is equal to 4. It means that R is equal to plus minus 2. R की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, प्लस माइनस 2. दैट्स वाई ये रॉन्ग हो रहा था हमारा. ये कैलकुलेशन मिस्टेक पे ध्यान देना बेटा, मुझसे हो जा रही है. सो व्हेन वी आर टेकिंग आर द वैल्यू ऑफ आर इज 2, देन व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर a plus AR equal to minus 4. So taking a common, 1 plus R is equal to minus 4, that is a 1 plus what is the value of R, 2 equal to minus 4. So a equal to आ जाएगा बेटा minus 4/3, है ना पहली कंडीशन में. तो उस कंडीशन में जो सीरीज आपकी बनेगी जब आप R को 2 ले रहे हैं, तो क्या सीरीज बनेगी, फर्स्ट टर्म minus 4/3, सेकेंड टर्म a इंटू आर दैट इज minus 4/3 इंटू द वैल्यू ऑफ R इज 2, थर्ड टर्म minus 4/3 into R square means square of 2, that is 4, and so on. So what is the series, minus 4/3 comma minus 8/3 comma 4 4 जा minus 16/3, ठीक है, and so on. In the second case we can take the value of R is minus 2, है ना, क्योंकि ये स्क्वायर जब रूट्स हटता है तो दो वैल्यू देगा. So when we are going to take the value of R is minus 2, then R is less than 1, है ना उस कंडीशन में. तो द फर्स्ट टर्म तो वही रहेगा. फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बेटा, वैल्यू ऑफ ए विच इज़ पुट करेंगे यहाँ पे ए प्लस ए आर इक्वल टू minus 4. सो द वैल्यू ऑफ आर इज minus 2. सो टेकिंग ए कॉमन, 1 प्लस आर इज इक्वल टू minus 4. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आर ईयर, तो 1 minus 2 इक्वल टू minus 4. सो ये कितना मिलेगा बेटा, 1 minus 2 minus 1 minus 4 minus minus कैंसिल आउट, द वैल्यू ऑफ ए इज 4. सो द फर्स्ट टर्म इज 4, सेकेंड टर्म AR 4 इंटू माइनस 2, थर्ड टर्म AR स्क्वायर 4 इंटू माइनस 2 स्क्वायर, फिर 4 इंटू माइनस 2 क्यूब, एंड सो ऑन. सो द सीरीज विल बी 4 4 2 जा माइनस 8, 2 2 जा 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 4 जा 32 माइनस 32, एंड सो ऑन. सो बेटा एक सीरीज ये बनेगी आपकी और एक सीरीज ये बनेगी. ओके, पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, ठीक है ना. इफ फोर्थ 10th एंड 16th टर्म ऑफ GPR x y and z, व्हाट वी हैव गिवन हियर इन क्वेश्चन नंबर 17, हमें दिया गया है द फोर्थ 10th एंड 16th टर्म. सो A4 A10 एंड A16 ये हमें दिए गए हैं. ओके, तो फोर्थ टर्म कितना है x, 10th टर्म है y एंड 16th टर्म है z. ओके, x y and z रिस्पेक्टिवली. प्रूव दैट x y z आर इन GP. What we have to prove? We have to prove that x, y, z are in GP. For this, what we have to show? अगर x, y, z GP में है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा बेटा? Common ratio is same. That is y upon x must be equal to z upon y. After getting cross multiply, we get y square is equal to xz, or we can say y is equal to root of xz. तो हमें अगर ये शो कर दें, हम ये या फिर ये शो कर दें, तो ये प्रूव हो जाएगा कि एक्स वाई जेड किस में है, GP में है. तो उसके लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा. तो ठीक है, जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं. द वैल्यू ऑफ x क्या है, फोर्थ टर्म, सो AR टू द पावर 3. द वैल्यू ऑफ y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इज द 10th टर्म, सो वी कैन राइट इट AR टू द पावर 10 minus 1, दैट इज 9. द वैल्यू ऑफ z विच इज A16 मीन्स 16 टर्म की वैल्यू z है. So it can be written as AR to the power 16 minus 1, that is 15. Now substitute these values in here either you can here, कहीं भी substitute करिए और फाइंड करिए वैल्यू. तो ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा इजी है तो यहाँ पे आसान करते हैं. यहाँ पे रूट है, सो वाई स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y बेटा, AR टू द पावर 9, AR टू द पावर 9 होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, AR क्यूब, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z बेटा, AR टू द पावर 15. सब्स्टिट्यूट हियर AR to the power 15. Now left hand side, see left hand side, a square and R to the power 9 into 2, that is 18.
and what is right hand side? A into A. If base are equal, this is the formula, this is the law of exponent. If base are equal, then power must be added. So A and A after together gives A square, and here r to the power 3 and r to the power 15, that is 3 plus 15. So what we get? A square r to the power 18 equal to A square r to the power 18. This is your proof. Okay, you can just take the screenshot of this question. Next question, question number 18. Find the sum of n terms of the sequence. Here we have given a sequence, that is 8, 88, 888 and so on, and we have to find the sum of n terms. ठीक है, तो first we will write it like Sn is equal to 8 plus 88 plus 888 and so on. We need to find till n terms. Okay, we need to find the sum of this series till n terms. Now, so beta, what is the algorithm for finding the sum of n terms of such kind of series? First we need to take 8 as common. So what we get within the bracket? 1 plus 11 plus 111 and so on till n terms. What is the second step? The second step, we have to multiply and divide by 9. So dividing by 9 and multiplying by 9, we get 9 plus 99 plus 999 and so on till n terms. Now 8 upon 9. What can we do here? We can break 9 as 10 minus 1. We can break it like 10 minus 1 and 99 as 10 square minus 1, because 100 minus 1 is 99. And in similar manner, we can break 999 as 10 to power 3 minus 1, 1000 minus 1, 999 and so on till n terms. Okay. Now 8 upon 9. This can be break as two series. Now this is clearly seems here, this is a miscellaneous series. Miscellaneous series means this is a combination of two series. If you see, the very first series is 10, 10 square, 10 cube and so on. So we can write it like 10 to the power 1 plus next term 10 square, for next term 10 to the power 3 and so on till n terms. This is the combination of two series, and the second series is minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1 till n times. So taking minus common, we get 1 plus 1 plus 1 till n times. So now 8 upon 9. Now see the first series. If you see the first series, the very first term of the series is 10, which is denoted by small a, and the common difference, if we divide the term by its preceding term, then we get the common ratio is 10, which is greater than 1. So now applying the formula of n terms here, we get a, which is 10, r, again the value of r is 10, a r to the power n minus 1 upon r minus 1, okay, and plus, sorry, minus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Since 1 is adding up to n टाइम्स, अगर हम 1 को n टाइम्स तक ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी उसकी? n आएगी. अगर हम 1 को 2 बार ऐड करते हैं तो 2 आती है. 3 टाइम्स हम ऐड करते हैं 1 को तो 3 आती है. 4 टाइम्स वी एडेड 1, वी गेट 4. देन इफ वी एडेड 1 till n times, then we get here the value of is n. Now multiply this amount within the bracket, we get 8 10 ja 80, divide by 9 into 9, 10 minus 1 9, 9 9 ja 81, within the bracket 10 to power 9 minus 1 and minus 8n upon 9. This is your final answer. Pause the video and take the screenshot. Now next question beta. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आप खुद करेंगे बेटा. क्वेश्चन नंबर 20 देखिए. सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 20, so that the product of the corresponding terms of the sequence, the very first sequence is a,
AR square and so on. And the second sequence is AR square and so on, है ना. दो सीक्वेंस दिए हैं, तो हमें शो करना है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ दीज टू सीक्वेंस. दिस इज सीक्वेंस फर्स्ट, this is sequence first and this is sequence second. So we what we have to do, we have to prove that the product of the corresponding term of these two sequence form an GP and also find the common ratio, है ना. और common ratio भी find करना है. So the product of the corresponding term of sequence first and second क्या हो जाएगा बेटा करस्पॉन्डिंग टर्म का. सो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. सो हमें मिलेगा a इंटू ए एंड द सेकेंड टर्म हो जाएगा a r r and the third is a r square and in similar manner कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है ना, till n terms. अब हमें शो करना है कि ये क्या है भाई, GP. अगर बेटा ये GP है तो कॉमन रेशियो शुड बी सेम. सो कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे, बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से डिवाइड करेंगे. सो a r डिवाइड बाई a व्हाट वी गेट r. एक और चेक कर लेते हैं बेटा, इसको डिवाइड करेंगे a r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल a स्मॉल r कैपिटल R. सो दिस अमाउंट कैंसिल आउट, हियर वन पावर कैंसिल आउट, हियर वन पावर ऑल्सो कैंसिल आउट. व्हाट वी गेट r. सो कॉमन रेशियो इज सेम, है ना, कॉमन रेशियो इज सेम. सो वी कैन से दैट दिस सीरीज इज इन GP एंड व्हाट इज द कॉमन रेशियो. द कॉमन रेशियो इज r, इसको r डैश से नोट कर लीजिए, ठीक है, फॉर एनी नो कन्फ्यूजन, ठीक है. तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा. नेक्स्ट इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21. What is question number 21 is find four numbers forming a geometric progression in which the third number is greater than the first by 9. देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर है ये 21. हमें एक GP फाइंड करनी है. फाइंड फोर नंबर्स फॉर्मिंग अ GP. हमें क्या करना है, फाइंड फोर नंबर्स फॉर्मिंग अ GP. जो एक GP बना रहे हैं, ठीक है, in which the third term is greater than the first by 9. कंडीशन है द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट बाय 9, ठीक है. द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट बाय 9 एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18. सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ, है ना, द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18. तो दूसरा टर्म फोर्थ टर्म से ज़्यादा है, कितना, बाय 18. ये हमें दिया हुआ है, ठीक है ना. पहली कंडीशन क्या दी हुई थी बेटा हमें यहाँ पे, द फर्स्ट टर्म, द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट बाय 9. थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट बाय 9 मीन्स थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा है. एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18. और सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18. तो हमने कंडीशन बना ली, सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म से 18 ज़्यादा है. सो लेट अस टेक द फर्स्ट टर्म इज a, सेकेंड टर्म इज AR, थर्ड इज AR स्क्वायर, है ना, एंड फोर्थ इज AR क्यूब. ये हमने ले लिए आपके चार टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ द GP. नाउ अप्लाइंग द कंडीशन. पहली कंडीशन क्या है, थर्ड टर्म. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म, AR स्क्वायर. फर्स्ट टर्म तो यही रहेगा, ठीक है. तो इसको बेटा लेफ्ट में लाएंगे तो AR स्क्वायर माइनस A इक्वल टू 9. आफ्टर टेकिंग A कॉमन व्हाट वी गेट, R स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9. अगेन वी कैन राइट इट लाइक R माइनस 1 R प्लस 1 इक्वल टू 9, ठीक है. इसको यहीं पे रोकेंगे अभी. हियर A2 सेकेंड टर्म दैट इज AR, फोर्थ टर्म AR क्यूब प्लस 18. नाउ टेकिंग इट इन लेफ्ट साइड वी गेट AR माइनस AR क्यूब इक्वल टू 18.
नाउ टेकिंग ए आर कॉमन, व्हाट वी गेट विद इन द ब्रैकेट 1 माइनस आर स्क्वायर, ये तो मिलेगा, ए आर कॉमन लेंगे 1 माइनस आर स्क्वायर इज 18, अगेन फैक्टराइजिंग इट, सो व्हाट वी गेट 1 माइनस आर 1 प्लस आर इक्वल टू 18. दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड. ओके, this is actually equation number third, this is 4. Okay, 4. now equation 4 divide by equation third, divide करेंगे 4 को थर्ड से, तो क्या मिलेगा बेटा, ए आर 1 माइनस आर 1 प्लस आर इज इक्वल टू 18 एंड डिवाइड बाई थर्ड टर्म ए टाइम यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे कंडीशन आर माइनस 1 आर प्लस 1 ना. थोड़ा सा ना सिमिलर पैटर्न अगर हम बनाए, सिमिलर पैटर्न भी नहीं बन सकता, चलिए ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, ए आर माइनस 1 आर प्लस 1 इक्वल टू 9, मतलब डिवाइड बाय 9 हो जाएगा यहाँ पे. सो ए और ए कैंसिल आउट, आर प्लस 1 कैंसिल आउट, माइनस कॉमन लेंगे बेटा, आर माइनस कॉमन ले लेंगे ऊपर, तो मिलेगा मुझे 1 माइनस आर की जगह हो जाएगा आर माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1 इक्वल टू 9 2 जा 18, तो दिस अमाउंट गेट कैंसिल आउट, सो आर इज इक्वल टू हो जाएगा -2. कॉमन रेशियो कितना आ गया बेटा, -2. अब इजीली हम फाइंड कर लेंगे ए की वैल्यू. ओके, आर हमें मिल चुका है, तो ए की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर थर्ड. सो व्हाट वी गेट, ए वैल्यू ऑफ आर इज -2, सो -2 -1 and in another bracket -2 plus 1 equal to 9. So what we get, this is -3 and this is -1 equal to 9. So -3 into -1 that is 3a. So 3a equal to 9 imply a is equal to 3, है ना. a की वैल्यू आ गई बेटा, r की वैल्यू हमने फाइंड कर ली. नाउ फाइंड द सीरीज. सो फर्स्ट टर्म विच इज a, तो फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगा 3, सेकेंड ए आर, सो 3 इंटू वट इज द वैल्यू आर -2, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर 3 इंटू -2 स्क्वायर एंड फोर्थ टर्म ए आर क्यूब, सो 3 -2 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म सॉरी एंड सो ऑन. तो ये हमारी बेटा जीपी बन जाएगी, ठीक है ना. सो 3 इंटू -6 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12 एंड ये 2 2 जा 4 2 जा 8 -8 इंटू 3 -24 एंड सो ऑन. सो दिस इज द सीरीज, है ना. सो थर्ड टर्म अगर आप देखेंगे, सो थर्ड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म से 9 ग्रेटर देन है, ज़्यादा है. सेकेंड टर्म अगर आप देखें -6, वो फोर्थ टर्म से 18 ज़्यादा है, फोर्थ टर्म से 18, इसमें अगर 18 ऐड करेंगे आप तो आपको वापस यही मिलेगा. तो दिस इज योर रिक्वायर्ड सीरीज. ओके, आगे बात समझ में. पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट. सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज वीडियो लेक्चर. आशा है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड वर्क हार्ड.